Okay, a small bead Q can move freely along a smooth horizontal straight wire AB of length 3 meters. Three horizontal forces F, 10, and 20 act on the bead in the direction shown in the diagram. The magnitude of the result of the three forces are in the direction shown. Find the values of F and R. These three horizontal forces. This is a top view. This is a top view, guys. So R is the resultant angle. So be very, very vigilant on what the solution would look like. F ka component horizontal is F cos 70. Add 20 to that. Take away the other horizontal component along AB wire, 10 cos 30, usko subtract kiya. This gives you the net resultant ka component R cos 15. ये बड़ा important है. F cos 70 plus 20 minus 10 cos 30 is equal to R cos 15. Who's R cos 15? Resultant का horizontal component. मतलब इसका net effect. पहली इक्वेशन अगर बन गई है तो दूसरी भी बन जाएगी 2 सेकंड में. वेल 2 सेकंड में नहीं. जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी लीडिंग फोर्स नीचे की ज्यादा होगी 10 साइन 30. लीडिंग फोर्स नीचे इसलिए है क्योंकि आर नीचे पॉइंट कर रहा है. माइनस एफ साइन 70. 20 का कोई कंपोनेंट नहीं होगा वर्टिकल डायरेक्शन में. इज इक्वल टू आर साइन ऑफ 15. ईशा आपको समझ में आया ये? यस सर. आगे अरीब? Sir. Yes, sir, got it. Okay, Zara, no issue, right? If there is an issue, you can ask. No sir. All right. Or Zara, how was your day? सर सोई हूँ पूरा दिन में. It was a wonderful day. Nothing like just forgetting about all the problems. सर ख्वाबों में आ जाते हैं प्रॉब्लम्स. R and R cancel. So हमारे पास ये दो हमने रेशो निकाल के बेसिकली हमने F की वैल्यू फिगर आउट कर लेंगे. Is that clear to all? जी ईशा, मैंने किस तरह जरा टेक्निकली डिफरेंट स्टाइल से किया ना, डिवाइड करके इंस्टेड. ईशा क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि मैंने देखा कि एक आर कॉस था, एक आर साइन था. आर और आर कट जाएगा. अगर मैं डिवाइड कर दूं वो टैन बन जाएगा एंड दैट मेक्स लाइफ इजी. सर कैन यू सॉल्व इट लाइक दिस नॉर्मली? Normally. Like when you have a like you know a common variable in two equations. हाँ, और आप कह रहे हो कि उसमें डिवाइड कर सकते हैं हम? Yes sir. हाँ कर सकते हो, लेकिन लाइक जनरल वैसे पूछ रही हो जिंदगी में अदरवाइज? Yes sir. Yes. Yes. नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू. सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि उसमें ना उसमें पॉसिबिलिटी होती है ना कि किसी चीज की वैल्यू जीरो होने की. Yes sir. वही. हाँ, तो इसमें तो आपको पता है ना एफ जीरो है ना आर जीरो है. फोर्स. Okay sir. ठीक हो गया. Sir, इसमें 10-15 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है एंड देन सॉल्व करना है. Yes, very good. Part 2. Read part 2. Initially, the bead is at rest at A. It reaches speed B. It reaches B with speed 11.7. Find the mass of the bead.
नाउ गाइस 3 मीटर तुम्हारे पास डिस्टेंस है, एस मालूम है, इनिशियल स्पीड मालूम है, फाइनल स्पीड मालूम है, एक्सेलरेशन तुम निकाल लोगे। आर जो कि तुम्हारे पास रिजल्टेंट निकल आया होगा पहले पार्ट से, तो तुम कहोगे क्योंकि इसने मूव करना है आगे, तो आर cos 15 इसकी ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि आर रिजल्टेंट था, तो आर cos 15 इसको मूव अलोंग कर रहा है ए बी के, इज इक्वल टू एम ए तुमने निकाल लिया होगा, आर तुम्हारा निकला हुआ है, एम आ जाएगा। एग्रीड? come on guys. A के लिए हम equation of motion लगाएंगे। Yes, third equation of motion. Okay sir, ठीक है। Very good, ईशा। आगे चलें? Yes sir. All right, let's move on. मैं 2 सेकंड तुम्हें दिखाता हूं just to confirm. Are you guys comfortable with question number 14? ये similar question है than as a question we did earlier. Lemmy's theorem वाला, वही वाली science. लेंथ दी हुई है, रेशियोज निकल आएंगी, थीटा बोल दो, अल्फा बोल दो ऊपर वाले को, इस वाले को तुम थीटा बोल दो, इसको थीटा बोल दो, इसको अल्फा बोल दो, इसको 180 माइनस थीटा बोल दो, इसको 180 माइनस अल्फा बोल दो। ऑल गुड? Yes, sir. ऑलराइट, अब मैं जा रहा हूं लेटेस्ट पेपर्स में। ये हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था, यू गाइस रिमेंबर? डू यू रिमेंबर? ऑलराइट, मैं थोड़ा सा अब मैं गया हूं कहीं और। क्वेश्चन नंबर 6 अभी तक एग्जाम में नहीं आया ये। लिलिया, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। द डायग्राम शोज अ साइन attached to a point A. It is supported by 2 rigid light rods, AB and AC. AB is horizontal and AC makes an angle theta with the horizontal where sine theta is 0.75. The mass of the sine is 25 kg. Find the forces in rods AB and AC stating whether they are tension or compression. Tension compression means that its direction should be very clear to you. So just imagine something's hanging. What does this post feel? Does it feel that it's being pulled to the right here like that? Alivarech? And does it have these directions नीचे वाले में? So this would be tension, AB is tension, and AC is compression. Are we clear on this? Or am I wrong? Are we clear on this, or can you prove me wrong? सर इसी तरह होगा। ठीक है? You've thought about it? All right. So you've thought about it. So let's call this tension AB and let's call this tension AC. So at this point, there is a 250 Newton acting down. बस ये डायरेक्शन तुम लोगों ने सेट कर दी ना, फिर बाद में गेम खत्म है यहीं पे, मतलब गेम ओवर हो चुकी है। टेंशन ए बी and there is a force like that, AC. Oh, you don't agree? It's there. You say it's here. Okay, fine. It's here. Tension AC. Are you comfortable this way? Go ahead. Koi masla hi nahi. I have no issue. Actually, I'm more comfortable this way as well. So tension AC ko you break it down into 2 parts. Head to tail.
So this one is tension AC sine theta. This one on top is tension AC cos theta. So tension AB, which is to the left, should be countered by tension AC cos theta to the right. Agreed? सर इसमें जिस तरह आपने अभी पहले फोर्सेस ड्रॉ की थी तो उस तरह ड्रॉ करके लैमिस थ्योरम नहीं लग सकता? Yes. लग सकता है. The only problem is कि you can get. सर आप मंडे को क्लास लेंगे What do you mean? इन स्कूल? Face to face? यस कल क्या है? Friday? यस मैं तो सोच रहा हूँ कल भी आऊंगा. चलें सर फिर कल लैमिस थ्योरम समझा देंगे, मैंने ये क्लास नहीं ली थी. All right. है ये कह रही है मैं वेटिंग रूम में हूँ. ये केड़े वेटिंग रूम में? आए बेचारी उर्वा वेटिंग रूम में पड़ी है. अल्लाह. सॉरी उर्वा. मुझे पता ही नहीं लगा. तुम सबसे पहले ज्वाइन की थी ना, तब मैंने डीएक्टिवेट किया था, मुझे नजर ही नहीं आई तुम्हें वेटिंग रूम में. अपॉलॉजीज. डैम सर. ओए होए होए. कोई नहीं, ज्यादा परेशानी की बात नहीं है. हमने ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं अभी. हम 2 सेकंड में पिक कर लोगे. अच्छा, सो अरीब तुमने जो बोला है 250 नीचे आ गया, टेंशन एसी लेफ्ट पे आ गई, टेंशन ए बी लेफ्ट पे आ गई, टेंशन एसी ऊपर आ गई. तो अरीब ये डॉटेड लाइन मैंने खुद बनाई है, ठीक है ना, तो ताकि तुम्हें पता चल जाएगा एंगल कौन सा होना चाहिए. ये डॉटेड लाइन स्ट्रेट स्ट्रेच अराउंड की है और ये 180 माइनस थीटा हो गया. ठीक है अरीब, यू गॉट इट. और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये थीटा हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा. ठीक है ना. तो फिर जब तुम लैमीज थ्योरम करोगे तो फिर ये काम तुम्हें करने पड़ेंगे. और राइट एंगल ट्राइंगल बना के तुम साइन थीटा कॉस थीटा इस तरह की भी वैल्यूज निकाल सकते हो. खैर मैंने ये निकाला था कि राइटवर्ड, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो लेफ्टवर्ड टेंशन टी ए बी है और राइटवर्ड जो पुश है वो टी ए सी है. तो टी ए सी का कॉम्पोनेंट टी ए सी कॉस थीटा राइट पे एक्ट कर रहा है और इसी तरह ऊपर की तरफ टेंशन ए सी साइन थीटा ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट है इसका, दैट इज बैलेंसिंग द 250 न्यूटन वेट नीचे की तरफ. डज दैट मेक सेंस? तो टेंशन ए सी साइन थीटा की वैल्यू 0.75 है, विच इज 3/4 is equal to 250. 4 times 250 is 1000. 1000 over 3. So tension AC is 1000 over 3, which makes it 333.333 Newton. And you plug that in here with the cos theta value as 4/4, 3/4, 3/4 sin theta, 3, 4. 416 minus 9. 107. Okay, weird ratio. खुद ही निकालो कैलकुलेटर से और stuff. All good? Moving on. Lilia, you understood this? Yes, sir, I got it. क्योंकि ये पास पेपर में नहीं है, which is why I wanted you guys to do this. This is not available in any of the past papers. Okay. अच्छा, so I'll take this opportunity क्योंकि हम टेंशन्स की बात कर रहे हैं और इसी के साथ how about we do this? अपना where is Aisha? Is she here? No, she's not here. Okay, ईशा ये देखो तुम्हारे पास ये तुम्हें आता है कि एक पुली है और पुली के साथ 2 masses connected हैं. These are the directions of the tension. Yes, sir, pulley system आता है. ओ बेहतरीन हो गया, तो जिंदगी तो हमारी फिर इजी होगी ना. ओके, सो
और जो वेट कंपोनेंट है 12 वो नीचे है और ये नीचे है, राइट? जरूरी नहीं है कि 12 kg नीचे आए. It is a battle of the weight component mg sine versus the 70 hanging mass. 120 sine 40 अगर बड़ा होगा then 70, then only 12 kg will come down the plane. That is clear to all? Urva? Clarity on this? Yes, sir. Done. उसने कहता है कि एक्सेलरेशन निकालो, कॉमन एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों एक ही तरीके से एक्सेलरेट करेंगे. सो ये आपने देख लेना. अभी इक्वेशन बनाने से पहले वी हैव टू चेक. तो व्हाट इज 120 sin 40? कैन समबडी चेक प्लीज? 120 sin 40? 77.134. तो ज्यादा है वजन ना. तो 120 sin 40 minus tension. Tension is going to be the same throughout this one single string. Because it's one string, तो tension same होती है same string में. और ये मैंने tension सारी label की है. Immediate forces acting on this smooth plane के ऊपर 12 kg is the weight acting down minus tension up equals MA. F net equals MA. और ये जो दूसरा है वो ऊपर जाएगा. Tension is going to pull it up. 70 is its hanging weight equals MA. That's it. As easy as they come. Agreed? Agreed? Sir, इसमें हमें constant acceleration का कैसे पता है? Okay, again, this is a system which is attached. There is no गाड़ी का engine which is changing the driving force. तो हर चीज fixed है. तो acceleration constant है. पुली वाले में हमेशा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है ना? Yep. पुली वाले क्वेश्चंस में. Yeah, that in short. हरीब, पुली वाले सारे questions में constant होती है. ठीक है ईशा? Yes, sir. All right. पुली वाले सारे questions में acceleration constant होगी. Question number 5. Two boxes of mass 4 kg and 2.5 are linked by a light rigid rod, force of 15 Newton, pulling the boxes up inclined angle theta, sine theta की value given. Resistance to motions are given. Find the acceleration of the boxes and the force in the coupling. Force in the coupling means the force in the middle between them. क्योंकि ऊपर pull हो रहा है, तो this is the direction of the force within the coupling. Is that clear? T टेंशन. वेट कंपोनेंट बी का नीचे एक्ट कर रहा है और ए का भी वेट कंपोनेंट नीचे एक्ट कर रहा है. बी मास 2.5 है, सो इट इज 50 ड्राइविंग फोर्स ऊपर माइनस टेंशन माइनस 7.5 माइनस वेट. वेट इज 25 sin theta mg equals MA because it's accelerating. MA is 2.5A. That's one way, one equation type. Another equation can be formed for the object A. So ये object B की equation है. I will give you a better option after this. So object A के लिए the driving force is the tension minus weight component is 40 sin theta minus 10.5 is equal to MA, which is going to be 4A. These are two equations जिसके अंदर आपके पास sin theta के ratio है. आप इनको simultaneously solve करके values निकाल सकते हो. और दूसरा ऑप्शन ये था that you would have said overall in general the driving force pulling this entire system up is 50 minus
This system has an overall resisting force 10.5 plus 7.5, as well as overall mass of 2.5 plus 4.4 is 6.5, which makes it 65 sine theta is equal to 6.5a. This way, you have sine theta, you have mg, you have their separate forces, you have the 50, you have the mass. You will find a directly. No need for simultaneous equations, and you can plug a in one of the equations. मतलब एक ही equation बनानी पड़ेगी फिर, and you can get the value of the tension. एक ये तरीका. Which one do you like? Object B, object A, or combined equation? सर ये पहले वाले मेथड के अंदर आपने किस तरह सॉल्व किया है? ये ऑब्जेक्ट ए के अंदर 40 sin थीटा कहाँ से आया? 40 इसका ऑब्जेक्ट ए का मास था 40, तो उसका जो वेट कंपोनेंट एक्टिंग डाउन द प्लेन है 40 sin थीटा. जैसे कि बी ऑब्जेक्ट का मास था 2.5, तो उसका था 25 sin थीटा. ओके सर, ठीक है. गॉट. एक में टेंशन अपोजिंग फोर्स है, एक में टेंशन पुलिंग फोर्स है. ईशा बताओ, आर वी क्लियर ऑन दिस? उर्वा, यू गॉट द ट्रिक? पता नहीं सर. ये ऊपर वाली है ट्रिक. ट्रिक ऊपर वाली है कि 50, तुम कहो कि यार ये 50 है, इस पूरे डब्बे को तुम कहो इसके अंदर जो मर्जी हो रहा है अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो हो रहा है वो फ्रिक्शन 10.5 7.5 कंबाइन कर ली तुमने, और तुमने कहा इस पूरे सिस्टम का ये डब्बा है ना पूरा, ये इस पूरे का मास 6.5 है. 6.5 का जी साइन थीटा का वेट कंपोनेंट नीचे की तरफ माइनस किया, एफ नेट आ गया तुम्हारे पास, उसको एम ए के बराबर कर दिया, गेम ओवर. ओके सही है सर. उससे ए निकला, ए को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में डाल दिया, मतलब एक इक्वेशन तो एटलीस्ट बनानी पड़ेगी ना. ओके. ईशा, Sir, I get it. ऑलराइट, सुनो अब हम जा रहे हैं एक और जगह पे. हम जा रहे हैं लेटेस्ट पेपर पे. Give me a second, guys. Give me a second. I need to open them somewhere else first. Twenty 21 खुल जाओ Simpson. Open. All right, so this is question number 6 of what paper is this? Okay, so this is question number 6 for 2 October, November. Open, yellow. All right, guys, please थोड़ा सा try करो खुद 2 सेकंड. इतनी देर में मैं एक और सवाल निकालूं. Please try it yourself. Begin it. Please begin. Don't be afraid.
जी guys, बताइए, were you able to get somewhere with this question? They said find the tension in the lower string. So the tension in the lower string has to be T1. And this one at the top has to be T2. You can't assume that they are the same. You cannot assume they are the same. 30 degrees. One could resolve this. T1 cos 30 plus T2 cos 30 is equal to 100. T1 sine 30, sorry, T2 sine 30 is upwards. T2 sine 30 is equal to T1 sine 30 plus the weight. Is that all right, guys? Would you agree to this? Yes or no? Yes, sir. Then you will simultaneously solve and get the value of the tension in T1 की value निकालनी है basically. T2 को subject बनाओ, उठा के फेंको, and that's for 4 marks. You don't need to think too much. Find the are we good? Are we good? Everybody, are we good? Yes, sir. Find the least value of x for which the block remains in equilibrium in the position shown. The least value of x for which the block remains in equilibrium. इसमें क्या बस 100 की जगह x लगा देंगे and then x find करेंगे. Yeah, but what's the But sir, yeah? मतलब कि इक्विलिब्रियम में अगर है तो that means like दूसरी साइड से भी आपको like 100 ही मिल रहा है ना, तो उससे least value. No, they dropped x as 100. They said x is not 100 anymore. They said part B may find the least value of x for which the block remains in equilibrium in the position shown. So you have to consider when x is least, then this object is about to, or it's barely being held, like it's about to drop. Could you say that? There are two instances, Urva. I have an object, I'm pulling it, you know, and the force is just enough to stop it from dropping down. Would you agree? So, Sir, वो about to move up कब होगा? Maximum के ऊपर, like x. I think Arif, I think maximum इसका maximum का limit ही नहीं है. Think about it. Maximum. Sir, if we remove x, तो इसका resultant x होगा. No, ईशा, इस x की वजह से tensions exist करते हैं. ये वो वाला सवाल है अपना ज़ेरा वाला. ये इस x की वजह से ये tensions हैं. अगर x तुम remove कर देती हो ईशा, तो ये गिर जाएगा. Object ही गिर जाएगा. समझ रही हो? ये strings है ना? Yes, sir, yes. ठीक है. अच्छा, तो so let's form the equations. ये 100 की बजाय मैं x लिख दूं? Yes? Henji guys, Henji. Yes, sir.
and that's the cost thingy, right? What about the sine? What's the catch here? What is the catch? सर इसमें 50 वो होगी ना मेन फोर्स जो ड्राइविंग फोर्स है उसका जो वेट है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो सबसे बड़ी फोर्स होगी ना कि नहीं All right. So can you imagine that X is so small that the only tension you have is in the upper string, and there is no tension in the lower string. Does that make sense to you guys? T2 sine 30 is equal to 50, and T2 cos 30 is equal to X. T2 sine 30 gives T2 as 100, and 100 times cos 30 is under 3 over 2. So that's 50 under root 3. Does that make sense? It's completely outside the box thinking. Yes or no is the question. This is Yes, sir. ठीक है. October, November, 42, 21, 42, 21, 42, 21, October, November. All right, let's open the MS. Question 6. That is question 6. Uh, 86.6. हमारा क्या आया था? What is the value that we were getting? What is 50 under root 3? Can somebody calculate, please? So 86.6 here. Do you understand? सर थोड़ा बहुत Sir, I have a question. Yes, Urva, go ahead. I don't know if it's stupid or anything. Like, sir, I'm getting like the tension in the second string, we're gonna take it like 0. Yeah. Okay, except that's all that. Sir, दोनों strings की tension same है? No, because they're separate strings, so उनकी tension is different. Sir, तो हम ये नहीं कह सकते कि like जो ऊपर वाली string है उसको हम 0 कर दें. Will we get the same answer? All right. So, Isha, now Urva, in this case, कभी भी tension ऊपर वाली string में 0 नहीं हो सकते. क्योंकि ये hang कर रहा है. Imagine, अच्छा Urva, पता है, okay, imagine this, Urva. Imagine it like this. कि तुम्हारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और एक लूजली हैंग कर रही है एक स्ट्रिंग, और ये आहिस्ता आहिस्ता तुम पुल कर रही हो इसको राइट पर.
आहिस्ता से जब पुल करते हैं ये एक पॉइंट आता है, ये दोनों टॉट हो जाती हैं। शुरू में ये एंगल मतलब जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ये फिक्स पॉइंट है, तो फिक्स पॉइंट इसको हल्का सा यूं रखते हैं, फिक्स पॉइंट है। ऑब्वियसली ये इसकी मूवमेंट डायरेक्ट राइट पे नहीं जाती, इट्स गोइंग टू बी लाइक अ पेंडुलम लाइक मूवमेंट, क्या आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ इसकी हाइट भी इंक्रीज करेगी और ये यूं करके फ्लो करेगा, ये स्लैक होगा बेसिकली। तो देयर इज टू गेट टू एन इक्विलिब्रियम, मतलब ये स्ट्रिंग जो है ना स्लैक की, तुम थॉट रखोगी कि इसके अंदर फोर्स नहीं है, ऊपर वाले में हमेशा फोर्स होगी जी। सर क्यों? क्योंकि ये हैंग कर रहा है इसलिए। अगर अच्छा हाँ अच्छा, आई थिंक समझ आ गया, समझ आ गया। ठीक है। ये अब दिस इज आई डोंट नो इफ इट्स